Right. Good afternoon, everybody. Good afternoon. My gratitude to you all, especially to the Health Library and their staff, and to all the viewers. Today's topic is about acidity. We have taken this topic because I think every second person must be having it on this planet. And there are many people who have acidity and they don't know that acidity hai. Just because that burning sensation is not there, or some hiccups are not coming, or थोड़ा comfort zone में है तो उसको he thinks के acidity नहीं है. Certain amount of acidity body में है, so it is good also. Not that, but it should be in level. ज़्यादा हो गया तो problem. So today's topic will be covering about, first of all, how is acidity formed? Second thing, what are the diseases of acidity? And third is like what to do about it. So when we say ke, how is acidity formed? As you very correctly said ना. क्या बोले थे आप? हरी भरी करी. हाँ, हरी भरी करी. नो फॉर्मल. तो इन शॉर्ट देख लोगे हरी भरी करी में ही एसिडिटी हो जाता है. And this toxicity of the mind, I would say, is the highest amount of the reason of having any ailment as well as having acidity. So now let us understand, if you are having a lot of tension, stress, anxiety, what happens? Your solar plexus gets disturbed. When the solar plexus gets disturbed, your stomach, solar plexus is directly connected to the stomach, to the liver, to the gallbladder, to the pancreas. So all of these vital organs, to the liver especially, all of these vital organs start overworking, in the sense they start depleting and they start giving more heat in the body. Energetic heat I am talking. I am not talking about the physical aspect. So now when, for example, if the liver is overworking due to any reason, what will happen? Heat बढ़ेगा ना body में. Same way stomach starts creating, basically the digestive system starts creating many types of acids, and sometimes it is so drastic and so bad. I have seen people, if they throw out this thing, if they vomit or something, the floor का color change हो जाता है. And that means what must be happening inside? It's like acid, proper acid. नॉर्मल आप एसिड डालोगे तो भी जल्दी चेंज नहीं होता है, लेकिन ये करेगा तो फ्लोर का चेंज हो जाता है. मतलब इट इज वर्स देन दैट, है कि नहीं? सो व्हाट मस्ट बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑन द ऑर्गन विच आर देयर इनसाइड. स्टमक लाइनिंग गया, लिवर लाइनिंग गया, इंटेस्टाइन का म्यूकस, ये वो सब खत्म कर देगा. इट विल एक्चुअली इरोड. So now why is this happening? As I said, one reason is this mind. Second reason, of course, food, lack of exercise. अगर वो पूरा दिन पड़े ही रहेगा तो फिर even that can create an acidic body. Food means we have to look into 2 or 3 different things, like what kind of food he is eating, and secondly सीक्वेंस ऑफ फूड. मतलब सब कुछ खाने के बाद आप फ्रूट्स खाते हो क्या? तो 100% एसिडिटी होगा. पहले फ्रूट्स खा लो. सी इट्स नॉट के सब पहले डाइजेस्ट हो जाएगा 10 मिनट में, बट द सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट. तो क्या पहले फ्रूट डाइजेस्ट तो हो जाएगा, यहाँ तो फ्रूट पड़ा रहता है बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड. द डाइजेस्टिव सिस्टम is overloaded. Whether you eat this much or that much doesn't matter.
gets overloaded and cannot digest the fruits which has been eaten in the last. Now, wrong combinations of food. So milk with fruit. हाँ, मिल्क शेक पिया आपने, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक पिया. These are wrong combinations. We are spending so much of money and drinking what dry fruit milk shake. ये वर्ली आरजीएल पे 150 पौने 200 का इतना सा ग्लास देता है अभी. Mouth watering milkshake. But then what is happening inside? Either the dry fruit is getting digested or the milk aspect of the milkshake is getting digested. Then there are people who say in the morning, चिकू milkshake पीना चाहिए, बनाना milkshake पीना चाहिए. कोई भी milkshake पीना ही नहीं है. It is a blunder if you think that I am going to put on weight and if I drink banana milkshake. Some people think ना अरे यार मैं बहुत पतला है, तो कोई लोग क्या मेरे जैसे होंगे तो बोलेंगे चलो बियर पीते. और कोई लोग थोड़े बहुत सीधे लोग हैं तो बोलेंगे चलो बनाना मिल्कशेक पीते हैं. दोनों गलत है. You understand? I don't know what happens in the beer part. Toxicity तो बढ़ेगा ही बॉडी में. But milk का मुझे मालूम है कि banana and milk will not go together. In fact, I would suggest do not add milk to any fruit. It is a blunder. Do not add milk to any dry fruits. It's a blunder. Now, in India, especially we people like vegetarians, we eat what? पूरा दाल भात साग रोटी सब खाया एंड देन इमीडिएटली क्या करते हैं? दही खाते हैं. इमीडिएटली क्या करते हैं? छाछ पी लेते हैं. वो भी गलत है. See, it is there in the thali, agreed. There is a reason to it, but the timing is important. It has to be taken after some time. Why? Because after 20 minutes of your food which is over, somewhere down the line your system knows कि अभी food नहीं आ रहा है, तो the liver starts, जो liver जो काम कर रहा है, समझो overwork कर गया for some reason, and lots of acid has been shot out to digest the food. तो excess acid को खत्म करने के लिए छाछ दिया गया है, दही दिया गया है. So drink after 20 minutes. तभी किसको छाछ बोलेगा तो जाके लस्सी पी लेता है. तो लस्सी तो फूड के बाद पीना ही नहीं. छाछ पियो. और छाछ बनाने के टाइम पे मेक इट अ छाछ, नॉट अ लस्सी, बाय एडिंग मोर दही. 100 ml ऑफ दही टू 1 लीटर ऑफ वाटर मैक्स. बहुत ज्यादा हो गया. उसके अंदर आपको यू लाइक यू कैन ऐड कोथमीर, धनिया, व्हाट यू कॉल कोरिएंडर. You can add pudina to it. You can add, now there are some people who are very, they like to have spicy chas. I love to have very spicy chas. So I to make the chas from the beginning only. कपड़े में ये सब डाल देता हूँ, कोथमीर, फिर अपना ये क्या बोलते हैं इसको, पुदीना, फिर मिर्ची डाल देते हैं, ब्लैक पेपर डाल देते हैं, सब उसका पोटली बना के रख देते, 3-4 घंटे अंदर सोप कर देते. So allow अदरक डालना. Allow it to absorb into the chas and then drink the chas. Otherwise, normal chas is also very good. No issues. Don't ये सब ऐड करने का जरूरत नहीं. ठीक है. Now, coming to the thing के भाई, अगर आपको टिक्का खाना है तो एसिडिटी होता है. People say that, which is a myth. टिक्के खाने से एसिडिटी नहीं होता. In fact, I would suggest to eat at least 1 green chili every day. It is very good. It is high in vitamin C. The seeds of the mirchi, of that chili, will see to it that there will be no infection in the whole tract of intestines. So 1 chili is good. Not an issue at all. Now, sequence तो I have said so many times. Start with cold food or dessert. दोपहर के टाइम पे फ्रूट्स हाथ ही मत लगाओ. इट इज सेंसलेस. ईट फ्रूट्स ओनली इन द मॉर्निंग, पॉसिबली एम्प्टी स्टमक. सो ये सब सीक्वेंस फॉलो करो. यू आर गोइंग फॉर अ बुफे, देन ईट द डेजर्ट्स फर्स्ट.
गुलाब जामुन रखा है, हाँ अच्छा लगता है, फटाफट खा लो, नो प्रॉब्लम, 4 नहीं 5 खाओ, लेकिन पहले खा लो। फिर डेजर्ट्स में जाके देखते हो, अरे यहाँ तो केक भी है, तो पहले केक खाओ बाद में गुलाब जामुन खाओ क्योंकि गुलाब जामुन गरम है। आइसक्रीम है तो पहले आइसक्रीम खा लो, फिर केक खाओ, फिर गुलाब जामुन खाओ। सो फाइंड आउट व्हाट इज लो इन टेम्परेचर, लेट इट गो फर्स्ट। आई एम नॉट टेलिंग यू नॉट टू ईट, ओनली टेक केयर ऑफ द सीक्वेंस। Then hop on to the normal food which is there or salad or whatever, and then drink the soup in the end. हम लोग पहले सूप पी लेते हैं, उसमें सब गड़बड़ हो जाता है। Highest amount of acidity will happen when you go for a buffet, because एक तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखता है, माउथ वाटरिंग टेम्पटिंग, तो फटाफट फटाफट खा लेते हो, एंड देन उसके ऊपर आइसक्रीम तो है ही, सो दैट इज द डिजास्टर। आइसक्रीम पहले खा लो, ड्रिंक द हॉट सूप लास्ट। सपोज कुछ नहीं है तो गर्म पानी मंगा के पी लो, गर्म धनिया का पानी ले लो, उससे एसिडिटी कम हो जाएगी। राइट, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एसिडिटी के वजह से, ड्यू टू एसिडिटी व्हाट आर द इश्यूज दैट कैन हैपन। नाउ आई एम ऑन द वेरी पेरिफेरल दिस थिंग, मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ 1 घंटे में इतना डीप में नहीं जा सकता। कॉमन पब्लिक को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरे सब प्रॉब्लम्स तो बहुत है, मतलब बॉडी में एसिडिटी आ गया मतलब द बॉडी इज एक्सट्रीमली क्लोज टू हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इश्यूज related to physical issue. First and most important problem with acidity, what happens is it will start corroding, eroding calcium from your body. So bones will pain, जरा सा लग गया so now how will you know? For no reason your knees will pain. तो डॉक्टर के पास जाओगे, वो क्या बोलेगा, अरे कैल्शियम कम है, क्या आर्थराइटिस हो गया। कैसे हो गया आर्थराइटिस? टॉक्सिसिटी है। देन वेरी कॉमन बैकबोन डिसऑर्डर्स, simple, due to simple acidity the person is going through backbone disorder since years together because he is taking medicine for the spinal cord whereas the problem is not there in the spinal cord. So x-ray will show, अरे इधर गैप हो गया, उधर गैप हो गया, अरे एज के साथ सब गैप होता है बाबा, उससे कुछ दुखता नहीं है। It is a toxicity along with the gap is creating a greater problem. गैप हो गया तो क्या बाजू का नस दब गया क्या आपका? नहीं ना, तो क्यों दुखना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया, कुशनिंग कम हो गया, टॉक्सिसिटी बढ़ गया, उधर गलत जगह से बोन निकल रहा है, स्पर बनता है, क्या क्या हो जाता है उसमें। When bones get eroded and when they want to heal themselves and when the calcium doesn't go in the correct manner to that bone in that space, a wrong growth happens. Then it starts pricking the nerve over there and then there is a pain. Why would that happen? Acidity. Who has eroded the bone? The acidity in the blood, in the body. Huh? Some people say, अरे यार मैं तो इतना अच्छा पतला वाला आदमी हूँ, हार्ट अटैक आ गया। No cholesterol complaints. Blood में toxicity है. Now it has become so bad that acidity is entered into the blood. It's like आपके गाड़ी में ऑयल है, लेकिन ऑयल के साथ मैंने थोड़ा जंग डाल दिया, रस्ट डाल दिया लाके, थोड़ा कचरा डाल दिया, थोड़ा सैंड डाल दिया, और फिर वो इंजन में जाके क्या होगा, चोक होगा। सेम हैपन्स ओवर हियर। So very common you are seeing na people suddenly going for a heart problem in the hospital. They do not have complaints of cholesterol. Cholesterol आप चेक करो, आइडियली कोलेस्ट्रॉल से हार्ट प्रॉब्लम होता ही नहीं, अगेन दैट इज ऑल्सो मिथ। लेकिन क्यों हुआ ये? सडनली द वाल्व्स डोंट फंक्शन प्रॉपरली। Then another major reason of stroke.
due to acidity, sometimes what happens is the blood in the heart doesn't happen to move out completely. मतलब जो pumping होता है ना उसमें थोड़ा सा blood रह जाता है. Now for some reason, मतलब this acidity only of course, what happens, this blood becomes gut, what we say, वो thick हो जाता है. Sticky and हाँ. And then when it goes into the, suppose for some reason if there is some problem, sometime, if that aspect starts moving up into the brain, what will happen? Brain clotting. Because the nerves in the brain are very thin. Unfortunately, कभी कभी हो सकता है. Now this will happen to a person who is lying down on the bed for a very long time. Therefore, lying on the bed, मत करो. Avoid. Walk. Go down, go up. Lift है तो भी कोई बात नहीं. Once in a day at least you should go up and down. At least 5 stories, 6 stories, 7 stories ऊपर नीचे करो. That is very good, very healthy. तो वो क्या बोलेगा मालूम? अरे यार मैं ऊपर आता हूँ तो बहुत सांस चलता है. चलने दो, कोई इश्यू नहीं है. अच्छा है, थोड़ा ब्लड घूमेगा. सबको सांस चढ़ता है. किसी को ज्यादा, किसी को कम. गो विद इट. है कि नहीं? So now let us come to the disorders of the stomach only. Forget the heart and brain. वो बोलूंगा तो और डर जाओगे सब. There are many other diseases. People suffer ear problems due to acidity. Acidity से क्या होता है? बॉडी में गैस बनता है. गैस किधर जाएगा? It will move upwards. When it moves into the eustachian tube, it will create a blockage in hearing. So there are chances of tinnitus happening for no reason. तो आपको लगेगा अरे क्या हो रहा है, क्या tinnitus क्यों हो गया? कोई नर्व डैमेज हुआ क्या? नहीं, नर्व कंप्रेशन हो रहा है. यूस्टेशन ट्यूब आपका कंप्रेस हो रहा है या फिर इन्फ्लेम हो रहा है. डैमेज कुछ नहीं, बट इन्फ्लेमेशन इज टेकिंग. हु इज डूइंग द इन्फ्लेमेशन? द गैस, द वात. So what do we call acidity? Pitta also. Sciatica. People treat sciatica for years together and nothing happens. I have given simple remedy for sciatica. कुछ नहीं, खाली त्रिफला पाउडर लो. उससे क्या होता है? कफ, वात, पित्त बैलेंस हो जाता है. sciatica ठीक हो जाता है. Within what? 8 days maximum. बोले वो कंटिन्यू करो. बिकॉज क्या हो रहा है? वो ठीक हो गया तो ट्रिफला बंद कर दिया लेने का. खाना तो चालू है ना, आउट ऑफ सीक्वेंस. नॉन वेज चालू है, दारू चालू है, पर ट्रिफला बंद है. देन दे से अरे यू नो वापिस हुआ. वापिस हुएगा ना. गलत खाओगे, सही गलत टाइम पे खाओगे, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. वॉक आफ्टर ईटिंग फूड इन द नाइट. Sleep for 45 minutes after eating food in the afternoon. These are two major rules. At least walk for 500 to 1000 steps after food, after dinner in the night. And in the afternoon, 45 minutes sleep. You don't have to sleep, you may just be awake, but lie down. That time the heat is very high. तो आप बाहर जाओगे तो और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. Now this I am talking pertaining to Indian climate, Mediterranean climate. हाँ, तो don't try this stunt in Alaska. That will not work. Now there is another problem. I don't know about abroad people what they do, but in India there are people who love to eat sugars, refined sugar. Main cause of acidity. Reused oil, main cause of acidity. Highest amount of triglycerides can be formed when you are reusing the oil. And we have got superhumans in Bombay and India. They can use the same oil for 10 days. इतना ऑयल ले लेगा, उसमें कांदा बनाएगा. फिर दूसरे दिन चलो आज भजिया, ऑयल है ना, भजिया बना दो, चलो. तीसरे दिन वड़ा बनाया.
चौथे दिन उसका फ्राई किया चिप्स, पांचवें दिन पता नहीं क्या, वो ऑयल जब तक खत्म नहीं होता है तब तक कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो मैं तो इतना ही खाता हूँ, कोलेस्ट्रॉल आ गया। अरे द मेन रीजन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इज दिस ओनली। Then you go to the doctor. First you go to the pathology. Pathology will charge you some 100,000 whatever. Then you go to the doctor. अरे डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखो, डॉक्टर बोलेगा अरे आपको स्टैटिन लेना पड़ेगा। Now you have already wasted 2 hours sitting outside the clinic. Time is money, money is time. You are going to pay 1 or 2,000 to the doctor. उससे अच्छा वो 1 लीटर तेल फेंक दो ना, सस्ता पड़ेगा। वो तो जान पे आ जाता है। हाय हाय तेल फेंक देने का, हाँ फेंक देने का। आप जो पानी से नहाते हो उसको आप पकड़ के वापस नहाते हो क्या उससे? नहीं ना, ये ऐसी बात है। रीयूजिंग द ऑयल इज लाइक you are using the same water and taking bath with it. तो क्या होगा? So remember one thing, reuse of oil is the worst thing that you can do. Anything refined is the worst thing that you can do and eat, because that is definitely going to cause acidity in your body. No two ways to it. No fiber. Now, as I said, diseases of the body, of course, when you go to the digestive system, there are many things that can happen. Your stomach can go haywire. Your system will go haywire, creating more of gas in the body. Your liver will not function properly. Under function karega. Due to which your pancreas can under function. So again diabetes. Acha, too much of acidity, high amount of acidity, untreated acidity entering into the intestines will create what? Ulcer. एंड देन अगेन अल्सर पे भी उसको दाल खाना है, वो भी किडनी बीन्स खाना है। आई हैव सीन दिस बीन गिवन टू अ अल्सर पेशेंट इन एन हॉस्पिटल। राजमा देते। अभी वो क्या थियरी है मेरे को तो समझ में नहीं आता। आई एम नॉट सो क्लेवर एज दोस पीपल ओवर देयर। हाउ प्रोटीन के लिए देता है। अरे प्रोटीन, लेकिन अल्सर पे तो खाना ही नहीं है आपको। That is true. 4 दिन नहीं खाओगे तो कौन सा प्रोटीन कम हो जाओगे, मर जाओगे। Generally they give दूधी sir. नहीं खाना चाहिए। क्या है डायटिशियन को क्या बनाने? दे हैव गॉट डिग्रीज ऑफ डायटिशियन, दे आर कमिंग फ्रॉम बिग प्लेसेस। Excess acidity in the body can also damage your kidney functioning. One reason, may not be the major reason, but a reason for kidney keratin to shoot up is excess of toxicity in the body. Now which toxicity? This toxicity is entered into your muscles. When the muscle movement is happening, toxins will come out. यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आता है तो किडनी फ्लश आउट नहीं कर पा रहे फॉर सम अदर रीजन, बट टॉक्सिसिटी ज्यादा हो गई। तो नाउ किडनी ऐसे वीक है पहले से, ऊपर से अभी टॉक्सिन ज्यादा आ गया तो उसको फ्लश आउट करने को भी प्रॉब्लम है। सो व्हाट अ स्मॉल डिजीज का नेम है एसिडिटी है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। It can create huge amount of problems in your body because acidity will increase gas in your body. Once the proportion of कफ, पित्त and वायु वात imbalance हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है, anything. Some people से मुझे एसिडिटी नहीं है तो भी हड्डी रुकता है। यूरिक एसिड का चेक कराओ। There is a pain in the knee, there is a pain in the back, there is a pain in the elbows for no reason. Get yourself checked. यूरिक एसिड चेक करो।
एंड स्टॉप ऑल दिस दाल फाल, तुअर का दाल, चना का दाल, पता नहीं कौन सा दाल खाते ही रहते, मसूर का दाल. Highest amount of acidity can be created with that. Why? Because of lack of exercise. Then this Punjabi people ना, वो क्या खाते? वो हाँ वो तो खाते ही है. चना 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 भटूरा भटूरा छोले छोले हाँ सॉरी छोले एंड चना ऑल्सो. काला चना था ना छोटा. अरे वो हमारे जैसे लोगों के लिए तो बैंड है वो. You should be a hard-working person for laborious person to eat all that. वो मत खाओ वो सब, भूल जाओ. I would not like to eat it even if I get free. रसा निकाल के खा लो. वो छोला वो जो भटूरे के साथ आता है वो ऐसे ऑयली है, पूरा फिर वो मैदे का भी बना देते कोई लोग. मैक्सिमम मैदा. मैदा इज व्हाट? रिफाइंड है ना. सो आई एम सेइंग एनीथिंग रिफाइंड उसको किचन के बाहर हटा दो. रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल, ये सब हटाओ, मत रखो घर पे. घर पे रखोगे तो यूज करने का क्रेविंग होएगा. देन देयर आर सम पीपल हु लाइक टू ईट टू मच ऑफ स्वीट्स. एसिडिटी होना ही, बिकॉज इसमें उसमें तो क्या रिफाइंड शुगर का वो किलोज ऑफ शुगर रहता है. देन नाउअडेज वी आर गेटिंग व्हाट? डाइट कोक, पेप्सी, क्या बोलते हैं उसको? डाइट कोला. डाइट कोलाज, डाइट ड्रिंक्स, डाइट केवड़ा. That is dangerous. High amount of acidity. You know, you take the packet and start reading what is written. They will never write the component directly. They will write numbers. E202. तो गूगल पे फाइंड आउट करो आप क्या खा रहे हो. You will be shocked. Finally, you will come to know, अरे I am vegetarian eating a non-veg item. Why? Because it is उसको नंबर दे दिया. आपको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो. बहुत सारी चीजें ऐसी है. I तो just vaguely said the number. I don't know if anything exists like E202, but there are everything in number coding nowadays. Why? तो public reaction नहीं होना चाहिए. So somewhere the governments are also working with these people because they are getting money out of it. Health आपका है, body आपका है, आप समझ के खाओ. हाँ, एक साइड से आप बोलोगे I will not eat butter. Very dangerous for the body. कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. अरे डाइट का पेप्सी पी सकते हो. डाइट कोला अच्छा है, डाइट चेवड़ा अच्छा है. कल उठ के वो बोलेगा डाइट पोटैटो चिप्स भी है. Who knows? They'll come out with that. तो डाइट में एस्पारेटिन आता है वो अच्छा है क्या? ये डाइट चिप्स भी आ गया है अभी. हाँ वो बेक्ड करके आता है. वो पतला पतला पोटैटो खा रहा है कि घास खा रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है. All of these people, मैकडोनल्ड है, then this J's है, they are using that only. पूरा पैकेट में आता है. You can store it for 6 months in the fridge. No issues. मार्केटिंग भी. पूरा पूरा प्रॉपर मार्केट ये वो सब भर भर के बेच रहे हैं लोग. और प्रोसेस फूड. Yes. ईट नॉर्मल घर का पोटैटो को चिप्स बनाओ, बिंदास तेल में यूज करो, डीप फ्राई करो और खाओ. कुछ नहीं होएगा. और तेल फेंक दो. ये डाइट चिप खाओगे ना तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा. वंस इन अ वाइल एवरीथिंग इज ओके, बट इफ यू हैव बॉट दैट 2.5 किलो का फुल पैकेट, अरे सस्ता मिलता है क्रॉफर्ड मार्केट मालूम, ऐसा करके वो 2.5 किलो लेके आके घर पे रख देगा रेफ्रिजरेटर में. रोज थोड़ा थोड़ा खा के वो तो बना के देगा. 1 साल के बाद भाई गया काम पे. ही विल बी सीन इन ऑल द क्लिनिक्स समवेयर और द अदर. कभी पैथोलॉजी में दिखेगा वो आदमी, कभी कोई डॉक्टर के पास दिखेगा. बिकॉज ही इज कंज्यूम्ड व्हाट? प्रोसेस्ड फूड. Processed food is the disaster for the body. Once in a while everything is allowed. महीने में 1-2 बार खाओ चलता है, लेकिन रोज मत खाओ भाई. Everything processed. Now we are getting processed lunch, processed dinner. Eat after 6 months, sir. You have to keep it in the deep freezer. अरे क्या लगा रखा है? बासमती चावल कुक किया आधा, यू हैव ओनली टू कीप इट फॉर 5 minutes इन द माइक्रोवेव. अरे फैंटास्टिक.
then doctor will only say only one time surgery करना पड़ेगा तैयार है ना उसके लिए So best thing is to avoid all these major diseases, see to it that your body remains slightly on the alkaline side. How are you going to do that regularly? Most important is water. Drink more water, again with the sequence that I have told you people so many times. 100 ml of water every 15 to 20 minutes or half an hour. 45 minutes before, 45 minutes after food, no water. When you are interchanging from dal bhat to whatever, something else, saag bhaji or whatever, in between you can have 1 or 2 gulps of water. That's a, what should I say, tolerance given, exception given. If you do not take water at that time also, it is good. But food with water is a disaster. So I always tell people, you eat this much food and then take this much water, you will have small levels of disease. You are eating this much food, you are drinking this much water, you will get some disease which remains with you lifetime but does not kill you. It will kill you slowly, slowly, slowly. Then you are having this much food and you are having this much water, you will get disease like cancer. So choice is up to you. How to eat, what to eat and how to drink water. Therefore I say, do not drink water with food. Avoid karo. Instead drink hot water with dhania ka seeds in it, coriander seeds in it. After half an hour, after 1 hour. Best way to remove acidity from the body is to drink piping hot water 1 hour after food. But now there is, you have to see that a person having a body which is always perspiring, मतलब the liver is already hot, उसके लिए ये ठीक नहीं रहेगा, उसको थोड़ा हीट बढ़ जाएगा बॉडी में. तो drink normal water in such kind of cases. See, every person is not same, every digestive system is not same. A to Z में बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है. So you understand your system. If a person is already very that क्या बोलते हैं, coming from the tamasic side, hot, जरा सा भी बैठा गर्मी हो गया, so then the person should not, number one, he should never enter into the zone of drinking cold water. He will definitely land up with a big level of disease. Drink normal water, alkaline water, and follow the rules of drinking the water. Now how do you make alkaline water? Up to you. Simplest way is just add 2 to 3 limes in that water. Lime drops into water, नींबू का पानी. 2-3 बहुत हो गया. 1 लीटर पानी में है 10 ड्रॉप डाला, बहुत हो गया. You do not have to squeeze the whole lime. If you like it, very good. Healthy है. Add little bit of pepper powder to it. Very good. लेकिन आप बोलोगे पूरा दिन यार नींबू पानी कैसा पिए? So don't go for it. But make it alkaline. 3-4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप डाला 1 लीटर में, काफी हो गया. It's alkaline. Finish. Safe, simple, and very easy to make. But now you will say, limbu रोज रोज किधर लेके घूमूं? Once you cut the line, then you can carry it, no? So then there is another way. Take a bottle, overnight उसके अंदर put 1 or 2 slices of cucumber, 5 to 10 pattas of mint, पुदीना का पत्ता, put 1 full stalk of coriander, fill it up with water. It will become alkaline. Carry that bottle everywhere wherever you are going. उसको पीते रहो. उसके अंदर आप लाइम स्लाइस डाल सकते हो या लाइम स्क्वीज करके भी डाल सकते हो. You can add a little bit of black pepper to taste. And then there are some people whose metabolism is not working properly. So you can add a little bit of cinnamon in it. Pinch of cinnamon. वो 1 चम्मच मत डाल देना. What will happen? Metabolism will increase. First of all, if you have kept cinnamon overnight,
Next day when you are drinking, it is very potent. Don't underestimate it. इतना 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 डाल दिया तो क्या होता है, बहुत कुछ हो जाता है उसमें. ना? You got arthritis, you got osteoporosis arthritis. Drink this water and tell me whether you got arthritis or not. Most of the people don't have arthritis. It is toxicity in the body that is creating a problem. They pop in calcium pills. क्या होता है? सालों साल कैल्शियम पिल लेते रहते हैं, कुछ होता है क्या वो लोग? Ultimately they go for a knee surgery. Why? Calcium is not being absorbed in the body. टॉक्सिसिटी के बारे में कुछ करो. Take vitamin D in the sunlight. Now calcium automatically will be absorbed. Calcium is mostly found in every product that we eat. You do not require calcium pills for it. Then there are some people have myth. चिकन खाया ना तो बहुत मस्त रहता है. Then I believe if people eating chicken have to be very strong, then the whole Parsi community, the whole Muslim community, the whole Punjabi community should never be able to break their bones if they fall down in the later age, after 50 or 60. Why do they get up after breaking a bone? पूरा जिंदगी चिकन खाया ना आपने, इधर गया कैल्शियम, चिकन डुप्लीकेट था क्या? It has taken away the calcium from your body, because high proteins, when they have to get digested in the bloody system, it requires more calcium. So actually you are damaging your body by eating non-veg food. It is a myth. I will eat mutton, so I will become very strong. It is stupid to think that way. I eat chicken, so my bones will be strong. Your bones will become brittle. I can write it and give it to you. There are some foolish idiots who tell ladies when they are pregnant to go on a non-vegetarian diet, तो आपका बच्चा strong आएगा. अरे, they are creating the greatest blunder in their life. बच्चे का हालत खराब हो जाएगा. I am not against any community as such, but body is yours. You take care of the body according to your situation. When there is a child in the stomach, you can't drink, smoke and eat non-veg. तो क्या निकलेगा पता नहीं. Chicken baby. It's a disaster. The moment you are touching non-veg food, that means your body has become toxic. The moment you are smoking, your body has become toxic. The moment you are drinking alcohol, the body becomes toxic. There is no exception to it. वो बोलते अरे यार किडनी में स्टोन है, डॉक्टर ने बियर पीने को बोला. अच्छा है ना, पेशेंट को जो चाहिए वो डॉक्टर ने बोल दिया. तो अरे भाई एक दो बियर पी, ये तो 12 बियर पी के आ जाएगा. स्टोन उधर ही रहेगा. पागल हो जाएगा थोड़ा बहुत. So what has he done? He has created more toxins for the kidney to flush out. I am not saying don't drink. You like to drink, but then you drink more water over it. Flush it out, because now kidneys will require a lot of work to do that they don't want to do. After going for a huge big party, they don't want to take any laxatives for that thing to come out from the system, and then they say आज ये ना थोड़ा पेट ऐसा फूला फूला ऐसा लग रहा है. अरे फूला फूला ही लगेगा, आज नहीं 10 दिन तक ऐसा ही लगेगा, because your system is not vacated. So do something, eat everything, eat, drink, be merry, do whatever you want, but see to it that your system vacates the next day. Even I indulge in food. I doubt whether the viewers or anybody of you must be eating the way I am eating. I doubt. But I see to it that whatever I eat has to be flushed out. And I also see that I eat a lot of raw food. Nowadays raw food is also coming injected. So again you have to be careful for that also. Oh, yes. That's the blessing of our Indian government. Food coming with steroids and what God knows what. I agree. तो कभी ये लोग सॉर्ट आउट करेगा प्रॉब्लम मालूम नहीं. So be careful of what you eat.
eat raw vegetables, eat fiber, carrot, beetroot. You know what? अभी मैं कुछ बोलूंगा ना so you will be shocked. Eat potatoes. With the skin. Yes. And if you can shred and eat it, nothing like it. Kacha. But I would suggest do not eat it every day. It is a very, very strong remedy for acidity. Yeah. Very strong remedy for acidity. Joints also. फिर साला कुछ दूसरा छोटा मत हो तो काम नहीं करेगा. When you boil the potato, see to it that you do not boil it fully. थोड़ा सा कच्चा रहने दो. That people say अरे ये तो potato कच्चा रह गया. बीटरूट थोड़ा सा कच्चा रहने दो. नहीं. यही सब खाना है. थोड़ा सा कच्चा खाओ. पूरा बॉईल करके क्या करने का है? You have got teeth ना. God has given you teeth ना. Use it. Grate करो. Eat it raw. Sandwich खाओ. Forget about the 2 slices of bread, but there is lot of tomatoes, there is lot of beetroot, there is lot of onion, there is lot of capsicum in it. लेकिन what these people dietitians will say, उसमें ब्रेड बटर आता है ना, बाकी तुम्हारा सब एकदम अच्छा है क्या? सब चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट सी प्रॉब्लम कम कहाँ है? यूज योर डिसर्नमेंट. डोंट जज व्हाट यू आर ईटिंग, डिसर्न व्हाट यू आर ईटिंग. कि वेयर व्हाट इज बेटर देन दिस. रास्ते पे जाके वड़ा पाव खाते हो, समोसा पाव खाते हो, उससे अच्छा सैंडविच खा लो. नाउ अगेन टोस्ट सैंडविच खाओ. Go to a place where there is too much of bhid bhad, so nothing remains stale. Advise your sandwich wala to boil the potatoes with haldi. He will do it. नहीं करेगा ऐसा नहीं है, करते हो. उसको पता नहीं का ये करोगे तो आपका पोटैटोज जो है ना उसमें जर्म्स नहीं लगेंगे. I have done it in my area. You come to Fort, all the potatoes, all the sandwich walas are having yellow potatoes. Most of these people know me. मैं तो किधर भी जाके खड़ा होकर खा लेता हूँ, लेकिन खाने के बाद उसको बोलता हूँ कि ऐसा करेगा ना और अच्छा है. They do it, they follow it. There is nothing, not a problem. Most of them, they also see कि अपने कस्टमर को कुछ नहीं होना चाहिए. That is what they have in their back of the mind, because they know they are on the footpath or on the road. कस्टमर को कुछ हुआ तो दूसरी बार आएगा नहीं. They also have that thinking. It is not कि सबको ऐसा रहता है. Eat fruits. Now eat more of citric fruits. Now you say citric fruit उससे तो एसिडिटी बढ़ेगा नहीं, उसके एल्कलाइन बढ़ेगा. What is नींबू पानी? Like that it is acidity. When it goes inside it becomes alkaline, because the liver is going to shoot alkaline juice to digest it. Then there are some people, एसिडिटी हुआ तो क्या करेगा? दूध में रोज वाटर डाल के पिएगा, है ना? मिल्क विथ रोज वाटर, वेरी गुड क्योर फॉर एसिडिटी. इट्स अ जोक. Milk is the highest toxic thing that you are having actually, and now you are putting rose water in it. Have you seen how rose water gets manufactured? Ruafla, with so much of sugar in it. Huh? Have you seen how rose water is manufactured? You will not touch rose water. कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा कैसे बनता है. Have you seen the ice cream that you are taking and eating? You see go and see a ice cream factory. You will forget eating ice cream. At least you will forget eating ice creams that the small shops and all that. Dangerous है वो. So hog on to everything. I am not saying no, but see to it that you hog on to fruits first. They are highly anti-acid, high pack of vitamins, minerals. Pomegranate खाओ, papaya खाओ, pineapple खाओ. If possible, eat one fruit a day. So today you have eaten pomegranate. Eat pomegranate only. उसके साथ एप्पल मत खा लो. नुकसान नहीं होएगा, लेकिन पोमेग्रेनेट का उतना असर नहीं होएगा.
1 hour before food compulsory 1 beetroot, 1 carrot, 1 apple का mixing करके खाओ. Otherwise 1 beetroot, 1 carrot, 1 cucumber. You a person having blood pressure, high blood pressure should have 1 beetroot, 1 carrot, 1 cucumber shredded 1 hour before food, lunch I mean. If a person is having huge problems with the digestive system, then instead of cucumber, replace the cucumber with apple. So 1 beetroot, 1 carrot, 1 apple. उसका आप जूस निकाल के भी पी सकते हो. Not an issue. You can add a little bit of pudina in it. हाँ? Eat pudina का पत्ता. At least 50 pattas of pudina, at least 50 pattas of curry leaves, curry patta. Eat that. It is a broad spectrum remedy for so many things. So many things. I must have said it not once but 100 times now, by now. Yes, chutney, green chutney. Why? Because it is effective on almost every issue. Why? Because it is working straight onto the liver. Every issue connected in your body is always connected with the liver, somewhere down the line. You rectify the liver, the problem is sorted. So if you go and see in depth, all my remedies are only connected with the liver. Most of them. धनिया का पानी में बोलता हूँ कहाँ जा रहा है? Now I give that when a person has got a fracture. Why? Because, of course, the way of taking it is slightly different. So I tell that person, रात को 2 tablespoons of dhania in say 600 ml of water. Next day filter the dhania, crush it. Now in the same water boil it, bring it down to 300 ml, filter and drink that water. What is happening? Number 1, your body is becoming alkaline. Number 2, you are giving a super heavy natural dose of calcium. Number 3, your digestive system is becoming super powerful. Why? Because it has got roughage in it, it has got proteins, balance, calcium, everything. And number 5, it acts as a diuretic. So your kidney is also getting clean. But where is it working first? On the liver. Every remedy, at least what I am giving, is always that way. And you see the results. If a person, normally a fracture takes 45 days, normal. You do this and you see the result. In 30-35 days वो ठीक हो जाएगा. Now 10 days in 45 days is a big thing, ना? छोटा बात नहीं है. Now I am not telling that person to take any kind of a calcium or medication. I can very confidently tell him calcium tablets बंद कर. Whereas no doctor will ever say that. In a fracture. Because we know कि वो calcium absorb नहीं करने वाला. This is supplement. This is natural. Sit in the sunlight. Vitamin D is the most important thing for calcium to be absorbed in the body. Vitamin D is the most important thing for iron to be absorbed in the body. Vitamin D is the most important thing for the B group to be in level, B1, B12, whatever. You keep on taking tablets, supplements, nothing is going to happen. You are going to flush it out from the body, and if you do not flush it out, there will be again acidity and toxicity. So then the doctor will give you antacid. He has got no choice. One antacid will make a space for another 2 antacids. Be ready for it. And even if वो काम किया तो किया, नहीं किया तो क्या करोगे? Will sit पकड़ के, burning. So eat fruits, eat raw vegetables, eat boiled vegetables, eat beetroot, peel the beetroot and boil it in water and drink that water. Don't worry about sugar. जब people आ रहे बीटरूट खाया तो शुगर बढ़ जाएगा, फ्रूट खाया तो शुगर बढ़ जाएगा, किधर से बढ़ेगा यार? वो अलग चीजें, वो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, कुछ समझते ही नहीं है. वो खाएगा तो भी नहीं होगा. अरे बैलेंस होता है यार. One beetroot you eat on sugar, if the sugar is high, it will come down by 10 points. If it is low, it will come up by 10 points. It is balancing it. One beetroot you have, when you have got high BP, it will come down by 10 points. If it is low, it will come up by 10 points. It is balancing it. उससे बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा नहीं हो जाता है. It is a balancer. You have got hormonal problems, ladies लोग को before menopause,
ये सब होता है, हार्मोनल इश्यूज आता है. बीटरूट खाओ, पुदीना खाओ, करी पत्ता खाओ, गाजर खाओ. ईट इट इन डोज. एक दिन एक आदमी मेरे को मिल गया, हाँ मैं बीटरूट रोज खाता हूँ ना. बोले कितना खाता है? बोले हम लोग एक बीट खाता है. बोले हम लोग एक बीट खाता है मतलब खाने के पहले पूरा फैमिली एक बीट बनता है. मैं बोला वाह, तुम्हारा प्रॉब्लम इतना पुराना है, यू थिंक एक स्लाइस बीटरूट में तुम्हारा काम हो जाना चाहिए सर. If you have a problem, then you should eat at least 2 to 3 beetroots a day. You have a digestive problem, at least 1 beetroot, 1 carrot, 1 apple a day. Together. If possible, 2 beetroots, 1 carrot, 1 apple, very good. Add pudina to it. All of these remedies which I am giving constantly, whether it is a fruit ka remedy, whether it is food ka remedy, they are dropping your acidic levels in the body. Acid निकल गया बॉडी में से एक्सेस, तो डिजीज जाना ही है. डिजीज कैनॉट सर्वाइव इन द बॉडी इफ देयर इज नो एसिड इन द बॉडी. ऑक्सीजन आपके बॉडी में ज्यादा है तो डिजीज कैनॉट सर्वाइव. डू योगा, डू प्राणायाम, अगेन दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन इन द बॉडी. Go for walk, meet people, socialize. हाँ, socialize with good people. और रोती हुई आत्मा के साथ मत बैठिए ना. सास बहू के झगड़े बात करेंगे, ऐसे लोग नहीं चाहिए अपने को. वो एसिडिटी बढ़ जाएगा उसमें. So basically you have to eat, drink, be merry, but follow the sequence. Right? I think you've done proper today. And we'll keep it to that much. Thanks a lot. God bless you all. See you all soon. Thank